So are you able to see the screen or just wait? I think now you are able to see the screen, right? Just wait for a minute. So now I think Pallavi, can you confirm whether you are able to see the screen or not, so that Yes, I sir. can continue further? Okay. So here, this is the chapter that we are going to study: India population, distribution, density, growth, as well as composition. So this is my uh, I have been graduated in geography from University of Delhi, and I'm currently pursuing MSc in Digital Humanities from IIT Jodhpur. So right now, moving to the introduction of this chapter, right? So if we will talk about the population, right, distribution, density, growth, and composition. So I think you know the introduction of this chapter. That as we all know very well that India is the second most populous country, right, after China in the world, with its total population of 1,210 million अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस. तो जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि इंडिया इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है आफ्टर चाइना के बाद, अगर हम देखते हैं पूरे वर्ल्ड में, जिसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है 1210 मिलियन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस. So, the India's population is larger than the total population of North America, South America and Australia put together. तो अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन देखते हैं तो इट इज़ लार्जर than the total population. अगर हम कंपैरिजन करते हैं वो दूसरी कंट्रीज से, लाइक नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया. बट यहाँ पे देखो एक आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है. पल्लवी, डू यू वांट टू एक्सप्लेन दिस आर्ग्यूमेंट? इट्स एन आर्ग्यूमेंट हियर that such a large population, if you check it from your book, like if you check it from the introduction part, so they have given an argument that such a large population, this one, are you see able to understand it, Pallavi? That it's an argument here that such a large population invariably puts pressure on the limited resources and is also responsible for many socio-economic problems in the country. Do you want to add something in this particular argument, if you want? Because we are in the final stage of revising this chapter, so I think you will be able to analyze it because we have gone through several times, right? So Pallavi, any response from your side? सर इसमें मतलब सर मेनली सर इन्होंने बोल रखा है कि जो लार्ज पॉपुलेशन होती है वो इनवेरिएबल करती है, मतलब जो मतलब इनवेरिएबल पुट्स रखती है, प्रेशर रखती है लिमिटेड रिसोर्सेज पे, लार्ज पॉपुलेशन। या सो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास जो है रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, कम रिसोर्सेज हैं, और उस पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है. तो उसकी वजह से यहाँ पे इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया है कि उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं कंट्री में, राइट? मैनी एंड इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन द कंट्री. So what will we will cover in this chapter? So we will cover patterns of population distribution, density, growth, and the composition of India's population, right? So here we will move to the next topic, that is distribution of population. So you can open your book as well. So here the map is also given in your book about the India distribution of population, as we have gone also. So here it's a dot map, right? So here you can see that in which state the highest population has been given. So India has is having an uneven pattern of population distribution. Yes, तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में क्या है, अनइवन पैटर्न हमें देखने को मिलता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का, कि कहीं पे बहुत ज़्यादा है और कहीं पे बहुत कम है. So according to 2011 census, Uttar Pradesh has the highest population. So 2011 सेंसस के बेसिस पे जो उत्तर प्रदेश है उसकी जो पॉपुलेशन है यहाँ पे वो हाईएस्ट है, विच इज़ फॉलोड बाय महाराष्ट्र, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. तो उसके बाद हम देखते हैं महाराष्ट्र की है, देन बिहार की है, एंड देन किसकी है पल्लवी, वेस्ट बंगाल की. सो कैन यू रीड दीज स्टेट्स so that you from this one, can you read this, Pallavi? यस सर।
Yeah, please go. Maharashtra, Bihar, West Bengal, Andhra Pradesh, along with Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka, and Gujarat together account for about 76% of total population of the country. Yeah. So here the states have been given from your book as well, that Maharashtra, Bihar, West Bengal, and Andhra Pradesh, along with Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka, and Gujarat. So these together account for about 76%. मतलब हम देखते हैं ये सभी states जो हैं वो 76% टोटल पॉपुलेशन जो है हमारी कंट्री में, वो इन 76% टोटल पॉपुलेशन इन स्टेट्स में से है पर्टिकुलरली. और पॉपुलेशन शेयर कहाँ पे स्मॉल है पल्लवी? पॉपुलेशन शेयर इज वेरी स्मॉल इन दीज स्टेट्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर. So if you see Jammu and Kashmir, it is only how much? 1.04. And if we move Arunachal Pradesh, it's only 0.11, and Uttarakhand is 0.84. So in spite of these states which are having fairly large geographical areas, लेकिन इन स्टेट्स को हम ऐसे भी देखते हैं यहाँ पे इनका जो है लार्ज जोग्राफिकल एरिया है, राइट? सो नाउ so so are you able to understand distribution now, Vallavi? So you can see this Yes, figure. sir. You can see this figure. So here what are you analyzing it, that number of persons? What do you think about this image? Yeah. So Sir, what? what do you think about this particular image? It is from distribution of population, like so what are you seeing it here कि on सर the earth? पीपल का सर जो लोग हैं सर, उनका सर देखो सर, जैसे अलग अलग खड़े, तो मतलब लोगों का सर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सर इधर उधर. Yeah, definitely. So they are distributed, unevenly distributed, right? So if we will move to the next, so अब यहाँ पे हमें reason पता होना चाहिए कि ये uneven distribution क्यों हो रहा है, right? How this uneven spatial distribution happens. So uh, wait. Yeah. So how this uneven spatial distribution happens? So Pallavi, what do you think, that what are the factors that are responsible for distribution of population? As we have revised it earlier also, that what are the factors? If you can speak out, like physical factors, if you can speak out, uh, like if you can read it. Yes, sir. Physical factor of distribution of population like climate, along with tertian and availability of water, largely determines the pattern of the population distribution. या सो फिजिकल फैक्टर्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो उसमें जैसे कि हमारा क्लाइमेट आ जाएगा, और उसके साथ अलोंग विद टेरेन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तो ये लार्जली डिटरमाइन करते हैं कि पैटर्न, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न डिटरमाइन करते हैं. सो दे ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन. सो पल्लवी, आफ्टर दिस चैप्टर विल ओवर, आई वांट टू आस्क यू सम एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, बिकॉज Okay, okay, sir. so now if we will move to this one, that North Indian plains, deltas and coastal plains, and have higher proportion of population. अब हम इन regions में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है higher proportion हमें देखने को मिलता है population का, and और than the interior districts. अगर हम interior districts से comparison करते हैं of southern and central Indian states, Himalayas, some of the northeastern and western states. Now third point, we can see the development of irrigation. हम यहाँ पे irrigation की development जो है वो देखते हैं, which is in Rajasthan, right? Which is in Rajasthan. So if you will go into your book and just check the distribution of population topic, you will also find out these points here. So these are important, that's why I have mentioned it here. So availability of mineral and energy resources in Jharkhand. तो जो mineral availability है किसकी, mineral और energy resources की ये झारखंड में, and development of transport network in peninsular states. So these have also been resulted in moderate to high concentration of population. मतलब आप देखोगे यहाँ पे जो है moderate to high concentration of population है in areas.
which were previously very thinly populated, जो कि पहले क्या थे, बहुत thinly populated थे, बहुत कम populated थे. Now if we will move to the next slide here. So here, Pallavi, we are talking about the socio-economic and the historical factors. Like, so social, socio-economic or and historical factors of distribution of population. So important ones are the evolution of settled agriculture. तो जो important है यहाँ पे वो क्या है? Evolution of settled agriculture and agricultural development, right? Pattern of human settlement, pattern of human settlement. So development of transport network, कि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट, और अर्बनाइजेशन. आई थिंक दीज टर्म्स आर क्लियर टू यू, पल्लवी. Yes, sir. So now this the urban regions of Delhi, Mumbai, can you read these cities name only? The urban regions of Delhi. The urban regions of Delhi, Mumbai, Kolkata, Bangalore, Pune, Ahmedabad, China, Chennai, and Jaipur. Yeah, so these have high concentration of population due to industrial development, right? तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हाई कंसंट्रेशन है यहाँ पे पॉपुलेशन की, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, एंड अर्बनाइजेशन, ड्रॉइंग अ लार्ज नंबर्स ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेंट्स. मतलब हम देखते हैं यहाँ पे लार्ज नंबर में रूरल अर्बन माइग्रेंट्स जो हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं. देन moving to the next topic, that is density of population. I think you know the density of population, Pallavi. What is that? Density of population, sir, जो सर पॉपुलेशन की सर मतलब कितनी वो है, या मतलब मतलब कि सर पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया में सर कितने नंबर, सर जो पीपल ऑफ नंबर है पर यूनिट एरिया में कितने हैं. यस, डेफिनेटली. तो डेंसिटी को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया, राइट? सो द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस. तो इंडिया में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी थी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? इट वाज 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर्स. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस. नाउ सो हेयर, सो यहाँ पे जो है आपका ये बुक में आपका दिया हुआ है, यू दैट द डाटा शोन इन, इफ यू विल मूव टू द सेकंड पैराग्राफ, दैट the data shown in appendix first A give an idea of spatial variation of population densities in the country, which ranges from as low as 17 persons per square kilometer in Arunachal Pradesh to 11,320 persons in the National Capital Territory of Delhi. And among the northern Indian states, तो अगर हम northern Indian states की यहाँ पे बात करते हैं, so it's Bihar, that is 1,106, West Bengal and the Uttar Pradesh. These have higher densities, right? While Kerala and Tamil Nadu have higher densities among the peninsular Indian states. And states like Assam, Gujarat, Andhra Pradesh. Pallavi, I have not mentioned this. You just open your book. In the second paragraph, I think you are reading through the book. Yes, sir. So here states like Assam, Gujarat, Andhra Pradesh, Haryana, Jharkhand, Odisha, these have moderate densities. In states में हम देखेंगे कि moderate densities हैं, and the hill states of the Himalayan region and northeastern states of India, excluding Assam. अगर हम असम को यहाँ पे exclude करते हैं, so these have relatively low densities, while the union territories, excluding Andaman and Nicobar Islands, these have very high densities of population, right? सो द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हेयर, यहाँ पे टाइप्स ऑफ डेंसिटीज आपकी दी गई हैं यहाँ पे. दैट इज फर्स्ट, विच इज सायोलॉजिकल डेंसिटी, एंड इट्स फॉर्मूला इज गिवन, टोटल प्रोडक्शन बाय नेट कल्टिवेटेड एरिया, राइट? एंड second one is agricultural density, that is total agricultural population by net cultivable area. Now here, if we will move towards the next topic, that is growth of population. I think we know very well that what is growth of population. So growth of population, Pallavi, if you want to read it out, growth of population in a very short manner.
that I have सर written. ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन सर जो चेंज आता है सर बिटवीन से 2 पॉइंट ऑफ टाइम और सर एट अ पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर एरिया पे 2 पॉइंट ऑफ टाइम। Yeah, and what are its two components? That सर is, इट्स नेचुरल और सर इंड्यूस। yes, and there are four phases of growth that we have studied already in this particular topic. Like the first phase, that is from 1901 to 1921, right? So, which is also known as the period of stagnant or stationary phase of growth of India's population. Pallavi, you just wait for a minute. Wait for a while. Pallavi, you can wait for 2 minutes more. Uh, ओके सर।
Yeah, so I think I should continue further. So here we were at this particular four phases of growth, right? So the first phase, according the phase first, it's from 1901 to 1921, right? So here it is also known as the period of stagnant or stationary phase of growth of India's population. तो इसे क्या period of stagnant or stationary phase of growth या इसमें हम देखते हैं इस फेज में होती है इंडिया ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन. सो बोथ द बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड. अब हम देखते हैं कि इस फेज में जो बर्थ रेट और डेथ रेट थे वो दोनों यहाँ पे हाई थे. सो पल्लवी, डू यू हैव एनी आइडिया दैट व्हाई बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड? इफ यू कैन एक्सप्लेन इट, like if you have studied the phase 1, I think it might be clearer to you that what why they were high, and if you can just explain it, the phase 1. Yes, Pallavi, are you there in the call? Yes, sir. Okay, so please explain it. सो द बर्थ रेट और डेथ रेट सर दोनों इंक्रीज इसलिए थी क्योंकि सर उधर सर पीरियड ऑफ ग्रोथ सर बहुत लो था, और सर जो नेगेटिव ग्रोथ था सर वो भी, सर जो उसका रिकॉर्ड है सर वो भी बहुत कम था। और सर इधर सर पुअर फैसिलिटीज थी, और सर मेडिसिनल सर्विस नहीं थी, और सर इलिटरेसी ऑफ पीपल थी सर लार्ज, और सर फूड और अदर अदर जो बेसिक्स थी सर वो सर वो डिक्रीज होती जा रही थी, मिल नहीं रही थी, तो वो सर इसलिए सर हाई बर्थ होता गया और हाई डेथ भी होती गई। Yeah, definitely. So here, what are the things like I have not added something like the poor health, right? So if we are talking about the poor health here, so poor health here and medical services. And illiteracy, mostly if we will see that illiteracy of people at a large, right? Illiteracy of people at a large, and we can say an inefficient distribution system of food also. So these are, Pallavi, these are some problems like in this particular phase 1. सर बैकग्राउंड वॉइस आ रही है सर। Okay, okay. Just wait. Now you are not. You will not hear the background noise. Right now, I think you are not able to hear it. So, of people at large and uh, inefficient distribution. So I can also make it bold so that you can go through this, and other basic necessities also. I think so. I am making it bold. Yeah. So if we will move to the phase two, Pallavi, so if you can add something that it is also known as the period of steady population growth, right? So what do you mean by steady population growth here? That the population birth rate was high here, right? Birth rate was high. Just wait for a minute. I want to mute it because I think now I am audible, Pallavi. So there were some background noise. That's why I have to Yes, sir. mute my video, mute my audio. So phase two, Pallavi, if you can add phase two, something in phase two, like it is also known as the period
of steady population growth, right? So here birth rate was high. यहाँ पे हम देखते हैं birth rate जो था वो high था और death rate was low in this period. So if you can add Pallavi in phase two, if you can add something. सर दरअसल जो जितनी भी सर इम्प्रूवमेंट थी हेल्थ की सर वो अच्छी हो गई थी और सर यहाँ पे उससे आपका क्या फर्क पड़ा था जो हेल्थ इम्प्रूवमेंट हुई थी और सैनिटेशन था उससे क्या हुआ था जो मोर्टेलिटी रेट था वो क्या हो गया था डेथ रेट कम हो गया था राइट डेथ रेट सर कम हो गई थी और सर बर्थ रेट सर तभी भी सर हाई थी। या सो उसके बाद इन्होंने दिया हुआ है कि दिस इज इम्प्रेसिव एट द बैकड्रॉप ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1920s एंड वर्ल्ड वार सेकेंड राइट सो उस टाइम पे ही हम देखते हैं कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन और 1920s में हुआ था एंड वर्ल्ड वार सेकेंड नाउ इफ वी विल मूव टू द फेज थर्ड दैट इज इट्स फ्रॉम 1951 to 1981 so it is also known as the period of population explosion right so in India so यहाँ पे हम देखते हैं कि birth rate was high so Pallavi what do you think that in this period birth rate was high and death rate was low right so is uh, is it correct here that if you want to add something in this period in phase third if you want to add something so that I can add it like फेज थर्ड yeah phase three यस सर इट इज सर इसको सर ये 1951 से सर 1981 के बीच में होता है और सर इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। yeah और यहाँ पे जो birth rate था that was high and यस death rate बर्थ was low सर दैट सर बर्थ रेट हाई थी और सर बर्थ रेट सर गुड स्पीड में सर हाई हो रही थी और सर डेथ रेट सर I think death rate is सर that सेम थी। death rate यहाँ पे low था yes यस सर लो थी। so the average annual growth rate here was high as 2.2%. So it is in this period after the independence that developmental activities were introduced. तो इस पीरियड में हम देखते हैं कि जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज थी वो भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई गई थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोसेस एंड इकोनॉमी स्टार्टेड शोइंग अप ensuring the improvement of living condition of people at large so consequently यहाँ पे there was a high natural increase and higher growth rate besides increased international migration bringing in Tibetans, Bangladeshis, Nepalis and even people from Pakistan contributed to the high growth rate. Now if we will move to the phase fourth, so it is the phase if we will see post 1981 right just wait so I am just adding so post 1981 till present uh, so it is this phase so the growth rate of country's population through remained high इसमें हम देखते हैं जो growth rate था वो क्या था high था so has started slowing down gradually और जो growth rate था वो धीरे धीरे क्या होने लगा slow होने लगा gradually so एक downward trend यहाँ पे downward trend of crude birth rate is held responsible for such a population growth and this was in turn affected by an increase in the mean age at marriage improved quality of life particularly education of females in the country so the growth rate of population is however still high in the country and it has been projected by the World Development Report. Right. So here the next topic that we are going to study here it's the regional variation in the population growth, right? Regional variation in the population growth. So so Pallavi here, do you want to define this topic, regional variation in the population growth? Here, uh, if we will see the growth rate of population, right? So the growth rate of population during 1991, तो जो growth rate था
1991 से 2001 तक का इन इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो उसमें जो है यहाँ पे एक ऑब्वियस पैटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे स्टेट्स हैं, लाइक स्टेट्स आपके दिए हुए हैं इसमें। तो कैन यू रीड दीज स्टेट्स लाइक केरल? कैन यू रीड दिस states like from your book? Just read out states like Kerala and Karnataka, Tamil Nadu, yeah, Andhra are you Pradesh. reading it? Pallavi, are you reading it, or are you going to Yes, read sir. it? Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha, Puducherry, and Goa Yeah. show a low rate of growth, not exceeding. Tamil Nadu and Andhra Pradesh. So these states, you have to learn, remember these states. That's why I told you to read this. It's Odisha and then Puducherry and Goa. Like, so these show a low rate of growth, not exceeding 20% over the decade. So these shows a low rate of growth. If you see here, and then so after that, इसमें दिया हुआ है कि केरल registered the lowest growth rate, 9.4, not only in this group of states but also in the country as a whole. So now a continuous belt of states from west to east in the northwest, north and north central parts of the country. These has relatively high growth rate. So Pallavi, are you reading this line that एक जो continuous belt of states हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? अगर आप इंडिया के मैप में देखती हो, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो यहाँ पे हम देखते हैं इट हैज रिलेटिवली हाई ग्रोथ rate than the southern states. So it is in this belt comprising, तो इस बेल्ट में इन्होंने बताया कौन कौन से स्टेट्स आएंगे: गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, Chhattisgarh, and Jharkhand. So the growth rate on the average remained 20 to 25%. So so during 2001 to 2011 here, the growth rates of almost all states and union territories have registered a lower figure compared to the previous decade. So they have also given some states according to 1991 to 2001. So they have given the percentage decadal growth rate of the six most populous states, like namely Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, West Bengal, Andhra Pradesh, and Madhya Pradesh. So these have all fallen during 2001 to 2011. Now, अब यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया इज द ग्रोथ ऑफ इट्स एडोलसेंट्स। एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बताया है कि एडोलसेंट्स की जो ग्रोथ पे डिपेंड करता है ये। सो एट प्रेजेंट द शेयर ऑफ एडोलसेंट दैट्स अप टू द एज ग्रुप ऑफ 10 टू 19 ईयर्स। सो एडोलसेंट्स की एज ग्रुप में आते हैं 10, जो लोग 10 टू 19 ईयर्स की एज में है, इट इज अबाउट 20.9%, 20 अकॉर्डिंग टू 2011। जिसमें हम देखते हैं कि जो मेल एडोलसेंट्स हैं, पल्लवी रीड दिस लाइन: मेल एडोलसेंट्स कॉन्स्टिट्यूट 52.7% एंड द फीमेल adolescents it constitute 47.3%, right? So the adolescent population to regarded as the youthful population. So adolescent population को हम it regarded as the youthful population. Pallavi, are you there in the call? Yes, sir. Yeah. So are you able to understand it now? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So adolescent population is regarded as the youthful population. And then we have the
but at the same time they are quite vulnerable if not guided and channelized properly. So there are many challenges for the society as far as these adolescents are concerned. अब ये बहुत सारे challenges भी हैं हमारी society के लिए. अब जब adolescents की बात हम कर रहे हैं, so there are many challenges जिसमें से हमारे आते हैं lower age at marriage, right, कि कम उम्र में शादी कर देना, then illiteracy, particularly female illiteracy, right, female illiteracy, school dropouts, low intake of nutrients, high rate of maternal mortality of adolescent mothers, high rates of HIV, obligates, infections, physical and mental disability or retardedness, right? So these are some challenges that adolescents have to face. So I can also write here so that you will be able to learn it from this particular. So there are some challenges, like Pallavi, can you read out these challenges in the life of the adolescents? Like, what are these? Like, if you can read it, because Yes, sir. There are challenges for the society as no, far. we just try to give some points. Like in the points, if you can read it, like lower age at marriage only, lower age at marriage, and then the second one, Low sir, literacy, particularly female literacy, school drawbacks, dropouts, low intake of nutrition, high rate of material mortality of yeah, adolescents mother, high yeah, rate of HIV and AIDS. and then we have physical and so no need to read this. So now I am writing it so that you will be able to learn this. Illiteracy, right? Illiteracy. So particularly female illiteracy. Yeah. So here, in view of these, so the government of India has undertaken certain policies to impart proper education to the adolescent groups so that their talents are better channelized and properly utilized. So यहाँ पे national youth policy, you need to remember this word Pallavi, national youth policy, because most of the question I have seen your papers, so some sample papers, right? So where I have seen the question from national youth policy. So it is one example which has been designed to look into the overall development of our large youth and adolescent population. So Pallavi, it's a question for you that in which year national youth policy has been launched? In Sir, which year? sir, Yeah. 2014. Are you sure that it's in 2014? I don't think so. Yes, Uh, sir. just check it from your book. It has 2003 has been written, and you are saying 2014. Have you checked it, No, Pallavi? sir. Yes, sir. It is written the National Youth Policy NYP 2014 launched in February 2014. Yeah. So, but here in the book, have you seen it from in the net? No, sir. नेट से नहीं check करा. Okay, but in this book, in the PDF from your NCRT, it's 2003 written. I don't know why it's written. If it's 2000, according to its latest book, do you have the latest book or the old one? No, sir. Latest book. Okay, then I think it's having a mistake. It's 2014, I think, right? So it stresses on all-round development of the youth. So we can say um, what is the aim of this national youth policy? So it is about all-round improvement of the youth uh, uh, and adolescents, enabling them to shoulder responsibility towards constructive development of the country. So it also aims at reinforcing the qualities of patriotism and responsible citizenship. नाउ द थ्रस्ट ऑफ दिस पॉलिसी इज यूथ एम्पावरमेंट. अब इस नेशनल यूथ पॉलिसी में हम देखते हैं इसका मतलब क्या है कि यूथ एम्पावरमेंट होना चाहिए. मतलब जो है आजकल के जो यूथ हैं
उनका जो मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें देना चाहिए, किसमें देना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में आना चाहिए उन्हें, इन टर्म्स ऑफ देयर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, राइट? सो क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूथ्स आर लैकिंग इन दिस डिसीजन मेकिंग, एंड so it's important now, and carrying the responsibility of an able leader. So here, so these are some things. So it appears from the above discussion that the growth rate of population is widely variant over space and time in the country, and also highlights various social problems. So in order to have a better insight into the growth पॉपुलेशन, तो अब अगर हम पैटर्न को समझेंगे पॉपुलेशन की, तो हमें क्या समझना पड़ेगा, वी नीड टू मूव टुवर्ड्स द पॉपुलेशन कंपोजिशन. सो आई हैव टू टेक वन मोर स्लाइड फॉर पॉपुलेशन कंपोजिशन. It's another topic. So I think Pallavi, these are. I think if we will revise it, uh, all the chapters in the same way that I did it today. So I think it's beneficial to you now, before the exam or not. Before the exam, it will be beneficial. Yeah, please let me know. So what? If I will revise the chapters in the same way that I did it today, one by one from the term one, for all the remaining chapters, like tomorrow, rather not taking your test. So it is okay with you. Yes, So sir. Yes, sir. yeah, because once again you have gone through the chapters, so it will be good for you to learn again. Yes, sir. It is. Sir, it will okay for me. Yeah. So population composition, what is that? Population composition, do you know that? What is that? Population composition का मतलब क्या है? सर पॉपुलेशन कंपोजिशन सर एक डिस्ट्रिक्ट फील्ड है जहाँ पे सर जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी है सर वो वास्ट एरिया में होती है और सर एनालिसिस करती है एज सेक्स और प्लेस ऑफ रेजिडेंस. Yeah, and ethnic characteristics, read it full, tribes, language, religion, marital status, literacy and education, occupational characteristics. So, population composition हम एक overall field की तरह यहाँ पे study करते हैं. I am writing down the definition so that you can go through it. So, population, just wait. Population composition. Population composition is a distinct field. Yeah, distinct field. We can write it distinct field. Distinct field of study within population geography, within the population geography, with a vast coverage of place of residence. Then we have ethnic characteristics. Then we have the tribes. Then we have language, religion, marital status, literacy, and occupation. It's education, sorry. And last one is occupational characteristics, etc. This is the definition of population composition, that population composition is a distinct field of study within the population geography, just with a vast coverage of analysis of age and sex, place of residence, ethnic characteristics, tribes, language, religion,
marital status, literacy and education, and occupational characteristics. I think it's clear to you, clearer to you. Now what is rural urban composition? We will further discuss on rural urban composition, right? What is rural urban composition? Here, if we see that um, composition of population by their respective places of residence is an important indicator of social and economic characteristics. So this becomes even more significant for a country where about तो यहाँ पे ये जानना आपका बहुत ज़रूरी है कि जो 68.8% पीपल परसेंट जो है टोटल पॉपुलेशन इट लिव्स इन विलेज. सो यहाँ पे इन्होंने आपको एक इन्फॉर्म इफ यू रीड द पैराग्राफ दैट डू यू नो दैट इंडिया हैज 6,40,867 विलेजेस अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011. राइट, तो इंडिया में इतने विलेजेस हैं आपके अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, जिनमें से हम देखते हैं आउट ऑफ विच 5,97,608 आर इनहेबिटेड विलेजेस. So however, the distribution of rural population is not uniform throughout the country. You might have noted the states. अगर आप देखते हो यहाँ पे states like बिहार एंड सिक्किम, तो इसमें हमें हाई परसेंटेज देखने को मिलेगी. बिहार और सिक्किम में हमें हाई परसेंटेज देखने को मिलती है रूरल पॉपुलेशन की. एंड देन जो गोवा और महाराष्ट्र हैं, दीज हैव ओनली लिटिल ओवर हाफ ऑफ देयर टोटल पॉपुलेशन. मतलब हाफ से भी कम पॉपुलेशन जो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र गोवा और महाराष्ट्र में के जो स्टेट्स हैं, इनमें आप देखोगे कि जो हाफ से कम पॉपुलेशन है वो विलेजेस में जो है हाफ से भी कम पॉपुलेशन विलेजेस में रहती है. यू कैन इमेजिन इट. और बिहार और सिक्किम का आप देखते हो तो बिहार और सिक्किम में बहुत हाई परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन है. So now the union territories, on the other hand, these have smaller proportion of rural population except Dadra and Nagar Haveli, which is only 53.38%. So here, uh, so जो proportion है urban population का इंडिया में, urban population की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इंडिया में it is quite low, but it is showing a much faster rate of growth. Now here, रूरल अर्बन माइग्रेशन का इन्होंने बताया कि कैसे अर्बन एरियाज में जो है डेवलपमेंट होता है. ना रूरल अर्बन माइग्रेशन जो है वो बताया गया अर्बन एरियाज में एंड रेल रोड्स इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. कहीं भी यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं आपके लाइक अराउंड कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, मैसूरू, मदुराई, कोयम्बटोर. सो दीज आर दीज. नाउ इफ वी विल मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज लिंग्विस्टिक कंपोजिशन. लाइक linguistic composition. So this is because India is a land of linguistic diversity, right? Linguistic means to say पल्लवी कि हमारी इंडिया में जो है वो कितनी नंबर ऑफ लैंग्वेजेस जो है वो बोली जाती हैं. तो अकॉर्डिंग टू ग्रेयरसन, जो लिंग्विस्टिक सर्वे हुआ था इंडिया का 1903 से 1928 तक, तो उसमें जो थी 179 लैंग्वेजेस काउंट की गई थी और एज मैनी एज 544 डायलेक्ट्स थी कंट्री में. तो अगर हम आज मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो देयर आर अबाउट 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस एंड अ नंबर ऑफ नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस. सो यहाँ पे आपका दिया गया है कि जो स्मॉलेस्ट लैंग्वेज ग्रुप्स हैं, you need to remember the smallest language groups that is Kashmiri, that are Kashmiri and Sanskrit speakers. Like, so here, if we move to the next, that is religious composition. So Pallavi, I'm not revising you in the deep, but we will doing it in the short for reason. So here, religious composition. What is religious composition, Pallavi? If you can explain it within a minute. That religion is one of the most dominant forces that is affecting the cultural and political life of most of the Indians. Yes, sir. Do you want to explain religious composition? If you can. Yes, sir. Religious is the most dominant forces affecting by the culture. सर जो religious है, religious composition है सर, ये बहुत सर फोर्सली से affected हुआ है सर culture और political life से. Since religion virtually permits to into almost all the aspects of people family. सर तब भी सर religion सर सर जो religion है तो भी सर एक एक्सेप्ट की जगह पीपल में हर जगह कम्युनिटी लाइव्स में सर इम्पोर्टेंट है उसकी. और सर हाँ जी, ऐसा कुछ सर फैमिली है ऑस्ट्रिक, उसकी सर 1.38%. एंड देन सर उसकी सब फैमिली सर ऐसी बहुत सारी वो है. Yeah.
So these are the subfamilies that have been given. If you will read it out, that this is a particular flow chart that I have not added in this particular slide, but you can go through in the book. So here the family is ostrich, that is Nishad, that is 1.38%, right? एंड जिसमें हम देखते हैं सब फैमिली ओस्ट्रो एशियाटिक ओस्ट्रो नेस्टन ब्रांच ग्रुप दिया हुआ है मोन खमेर मुंडा सो दीज आर स्पीच एरियाज सो द्राविडियन 20%. So mostly speaking, you need to remember the mostly speaking, that is Indo-European, because Indo-European, and if we will look at, that is Aryan, which is 73%. Yeah, sorry. So here 73%. So it's branch oblique group Iranian, Dardic and Indo-Aryan. So here speech areas आप इसमें देखते हो outside India, Jammu and Kashmir. So you need to remember these places, Pallavi. Outside India, Jammu and Kashmir, Punjab, Himachal Pradesh, UP, Rajasthan. So you need to learn this table. That is classification of modern Indian languages from your book. Now there is one more according to religious communities of India, according to 2001. So here the population of Hindus was 827.6, right? According to 2001. Like Hindus की यहाँ पे आप देखोगे सबसे ज़्यादा है population. So Muslims, the largest religious minority, these are concentrated in Jammu and Kashmir, certain districts of West Bengal and Kerala, and many districts of Uttar Pradesh in and around Delhi, and in Lakshadweep. They form majority in Kashmir Valley and Lakshadweep. So these are religious religions and landscapes. So in your short note, if you will see the page number 11, so here you are seeing religion and landscape. लाइक क्रिश्चियन पॉपुलेशन का इन्होंने बताया कि जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है डिस्ट्रीब्यूटेड है मोस्टली इन रूरल एरियाज में, और जो मेन कंसंट्रेशन है वो कहाँ पे है, इट्स अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट अराउंड गोवा केरल एंड ऑल्सो इन द हिल स्टेट्स ऑफ मेघालय मिजोरम नागालैंड छोटा नागपुर एरिया एंड हिल्स ऑफ मणिपुर. नाउ सिक्स जो है सिक्स आर मोस्टली concentrated in relatively small area of the country. Jains and Buddhists, the smallest religious groups in India, have their concentration only in selected areas of the country. Now, what is working population, Pallavi? Composition of working population here. That population of India जो है यहाँ पे तीन ग्रुप्स में यहाँ पे डिवाइडेड है, लाइक Main workers, marginal workers, and non-workers. या. So what are main workers and marginal workers? Sir, main workers. What is the सर मेन difference? वर्कर्स वो हैं सर जो होम बेस्ड होते हैं सर. मेन वर्कर्स जिसमें सर इट ऑब्जर्व द वर्कर्स मेन एंड मार्जिनल वर्कर्स ओनली 99% लिविंग वास्ट मेजोरिटी ऑफ. You सर can read मेन from वर्कर्स वो this होते हैं particular सर जो note. एटलीस्ट वन 183 डेज काम एटलीस्ट 183 डेज काम करते हैं इन अ ईयर. Yeah, definitely. एंड And सर मार्जिनल वर्कर्स होते हैं सर कि 183 कम तक मतलब जो कम से कम 183 काम करते हैं इन अ ईयर. लेस yeah, देन 183. यस सर. definitely. So here, the you already told me the difference between main worker and marginal worker. So here is moving to the next, that is work participation rate. So you need to remember these topics. These are something that we have done the chapter uh, in some time. So work participation rate is that the proportion of working population of states and union territories. These show a moderate variation. अब यहाँ पे आप एक नीचे एक इंडिया ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का जो है बार ग्राफ देखते हो, जिसमें कि आपको दिया गया है ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन दी गई है, राइट. सो इंडिया पॉपुलेशन की, जिसमें हम देखते हैं कि कुछ लोग जो एंगेज्ड हैं, इंडिविजुअल्स कहाँ कहाँ पे एंगेज्ड है, फार्मिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड में है, सर्विसेज में है. सो दीज हैव डिवाइडेड. So you can analyze it.
सो अबाउट अगर हम देखते हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ में से, तो 54.6% जो है टोटल वर्किंग पॉपुलेशन यहाँ पे कल्टिवेटर्स की है, और ओनली 3.8% वर्कर्स जो हैं वो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में एंगेज हैं, और 41.6% वो दूसरे वर्कर्स हैं जो कि नॉन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, ट्रेड, कॉमर्स, कंस्ट्रक्शन और रिपेयर और दूसरी सर्विसेज में एंगेज हैं. So this is the analyze. We have to Let analyze me it, know Pallavi. what Yeah. So are you were you asking something, Pallavi? From yeah. So occupational categories here also have written. So what are the occupational categories? Uh, these have divided the major working population of India into four categories. First is cultivators, agricultural laborers, household industrial workers, and other workers. सो यहाँ पे आप देखते हो एक डाटा दिया हुआ है जिसमें आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कैटेगरीज में डिवाइडेड है, और पॉपुलेशन दी गई है जिसमें पर्सन्स प्राइमरी में कितने एंगेज हैं पर्सन्स. प्राइमरी में आपके ज़्यादा परसेंटेज, टोटल वर्कर्स की परसेंटेज ज़्यादा दी गई है यहाँ पे. So it is important to note that the proportion of workers in agricultural sector in India has shown a decline over the last few decades, and और कॉन्सिक्वेंटली जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में पार्टिसिपेशन रेट है उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिलता है यहाँ पे. सो द स्पेशल वेरिएशन ऑफ वर्क पार्टिसिपेशन रेट इन डिफरेंट सेक्टर्स इन द कंट्री इज वेरी वाइड. So for instance, the states like Himachal Pradesh and Nagaland, these are very large shares of cultivators. Or on the other hand, like Bihar, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand, West Bengal, and Madhya Pradesh, these have high proportion of agricultural laborers. So the highly urbanized areas like Delhi, Chandigarh, and Puducherry, these have a very large proportion of workers being engaged in other services. This indicates not only availability of limited farming land, but also large-scale urbanization and industrialization requiring more workers in non-farm sectors. So Pallavi, this chapter has been completely revised. So any other doubt you can ask me right now. Are you there in the call? Pallavi, are you there in the call? Because I have completely revised this chapter, or do you have any doubts you can ask me regarding from this chapter? Yeah. So, do you have any doubt or queries, or what? do you have any doubts or queries? No, sir. No, sir. Okay. So, I think it's enough for us to do this chapter today, because it's more than, I think, 1 hour. Like that I have been given for revising this chapter. So I will do one thing, Pallavi. I can share you the questions, like from extra questions. Or should I ask you some questions right now? You can give me the answer if possible or not. अगर आपने ये चैप्टर रिवाइज किया हुआ है तो आप आंसर दे सकती हो मुझे, और या फिर नहीं अभी इस टाइम पे. सो दैट आई कैन आस्क यू क्वेश्चंस लाइक, Uh, if possible, please respond it right now. Yeah, are you there in the call, Pallavi? You can tell me whether should I. आप मुझे ऑप्शन बता दीजिए, या तो मैं आपको जो है वर्कशीट, आई कैन शेयर यू द वर्कशीट so that you can try on your own, like from at any time. I think because we have revised this chapter, so I think there are no further doubts in this chapter, because in these upcoming days we will tomorrow we will go through another chapter from term 1. Pallavi, are you there in the call so you can respond now? So because I have to ask you uh, regarding whether I have to continue or whether I have to stop at this moment. Sir, what? Should I have to continue further to ask you some questions, or should I share you worksheets on the what on your number, WhatsApp number, so that you can सर आप जी से कल ले लीजिएगा. या और कल मुझे जो है आपका एक चैप्टर भी रिवाइज कराना है दूसरा, टर्म 1 में से ही. लाइक हम इंडिया पॉपुलेशन हमने कर लिया है, तो हम सेकंड चैप्टर देखते हैं, अब सेकंड चैप्टर करेंगे. इसके बाद,
सेकंड चैप्टर आपका इसमें जो है so I am stopping here the recording of this particular